Lecture 7. Building a Business Plan. कंटेंट फॉर द कोर्स। ये सभी कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले अपनी वीडियोस में। व्हाट दिस कोर्स वुड इंक्लूड। इस कोर्स में आपको 20 वीडियो लेसन्स है और हर वीडियो लेसन के साथ एक आपको केस स्टडी भी दी गई है जिससे आप और अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। Contents for Session 7. In this session, we will discuss about the concept and scope of business plan, value and importance of business plan, then last preparation and evaluation of the business plan. Introduction. Virtually every business needs a business plan. Lack of proper planning is one of the most often cited reasons for business failure. Business plans help companies to identify their goals and objectives and provide them the tactics and strategies to reach those goals. In continuation with the previous slide, by its very definition, a business plan is a plan for the business classifying why it exists, who it exists for, what product and services it provides these client group, how it intend to develop and deliver these product and services, and where it is headed. Rabisa Jonas wrote in Information Outlook, a business plan is a roadmap for the organization showing the destination it seeks, the path it will follow to get there, and the supplies and wherewithal required to complete the journey. So, the business plan is very important. Let's discuss the concept of business plan or what is business plan. Basically, planning is the first and the most crucial step to start a business. A carefully charted and designed business plan can convert a simple idea or innovation into a successful business venture. So, we can say that a business plan is a perfect tool to write the most accurate portrait of the market, product, services, and the entrepreneur's behavior and attitude. Let's discuss the concept and scope of business plan. Planning is the first and most crucial step for starting a business. A careful, charted, and meticulously designed business plan can convert a simple idea or innovation into a successful business venture. A business plan is a roadmap for starting and running a business. A well-crafted business plan identifies opportunities, scans the internal and external environment to assess the feasibility of business and allocates resources in the best possible way, which finally lead to the success of the plan. It provides information to all concerned people like the venture capitalists and other financial institutions, the investors, the employees. It provides information about various functional requirements, that is, marketing, finance, operations, and human resources for running a business. A business plan is the blueprint of the step-by-step procedure that would be followed to convert a business idea into a successful business venture. A business plan, first of all, identifies an innovative ideas, researches the external environment to list the opportunities and threats, identifies internal strengths and weaknesses, assesses the feasibility of the idea and then allocates resources for production, operation, finance, human resource in the best possible manner to make the plan successful. Let's discuss the objective of business plan. First, give direction to the vision formulated by entrepreneur.
Second, evaluate the prospect of the business. Third, monitor the progress after implementing the plan. Fourth, pursue others to join the business. Fifth, seek loans from financial institutions. Sixth, guide the entrepreneur in the actual implementation of the plan. Seventh, identify the strengths and weaknesses of the plan. Eighth, identify the resources that would be required to implement the plan. Last, clarify idea and identify gap in management information about their business, competitors, and the market. Now let's discuss the value and importance of business plan. Business plan has a survival major users. These includes internal planning and forecasting, obtaining funding for ongoing operations or expansion, planned divestiture and spin-offs, and restructuring or organizing. While business plans have elements common to all users, most business plans are tailored according to their specific use and intent audience. When used for internal planning, business plan can provide a blueprint for operation of entire company. A company performance and progress can be measured against the planned goals. That involves sales, expenditure, time frame, and strategic direction. Business plans can help an entrepreneur or business managers to identify and focus on potential problem areas or both. Now let's discuss the preparation and evaluation of business plan. A plan which look very lucrative slash feasible at the first instance might actually not be when the details are drawn. Hence, documenting the business plan is one of the early steps that an entrepreneur should take. As discussed in the previous slide, the successful entrepreneur lay down a step-by-step plan that he or she follow in starting a new business. This business plan acts as a guiding tool to the entrepreneur and is dynamic in nature. It needs continuous review and updating so that the plan remains visible even in changing business situation. Now let's discuss the various steps of business planning in the next slide. Now let's discuss business planning process. First, primary investigation. Second, idea generation. Third, environmental scanning. Fourth, feasible analysis. Fifth, project report preparation. And last, evaluation, control and review. First point is preliminary investigation. Before preparing the plan, entrepreneur should first review available business plan if any. Second, draw key business assumptions on which the plan will be based. For example, inflation, exchange rate, market growth, competition pressure, etc. Third, scan the external environment and internal environment to assess the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Fourth, seek professional advice from a friend, relative, or a person who is already into a small business, if any. Second is idea generation. Entrepreneurship is not just limited to innovation, that is, generation of the entirely new concept, product, services, but it is also encompass instrumental value addition to the concept, product, services offered to the consumer, shareholder, and employees. There are various new ideas. Sources are first, consumer customer, second, existing companies, third, research and development, fourth, employees, and last, dealers or retailers. Also,
There are various methods to generate new ideas. First, brainstorming, reserve brainstorming, and brainwriting. Second, group discussion. Third, data collection through questionnaires, schedules, etc. from consumers, existing companies, dealers, retailers. Fourth, invitation of ideas through advertisement, mails, and the internet. Last point is value addition to the current product or services. So these are the various methods to generate new ideas. Let's move to the third point, environment scanning. Once a promising idea emerges through idea generation phase, the next step is environmental scanning, which is carried out to analyze the prospective strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the business enterprise. Hence, before getting into the finer details of setting up business, it is advisable to scan the environment, both external and internal, and collect the information about the possible opportunities, threats from the external environment, and strengths and weaknesses from the internal environment. The different variables to be scanned are in terms of socio-culture, economic, government, technological, demographic changes take place in the external environment and availability of raw material, machinery, finance, human resource, etc. with the entrepreneur. Fourth point is feasibility analysis. Feasibility study is done to find whether the proposed project, considering the above environmental appraisal, would be feasible or not. Environmental scanning is carried out to assess the external and internal environment of the geographical area or areas where entrepreneur intends to set up his business enterprise, whereas feasibility study is carried out to assess the feasibility of the project itself in the particular environment in greater details. Hence, true feasibility study would be dependent on environmental appraisal, yet it is far more descriptive. Next important step is project report preparation. After environmental scanning and feasibility analysis, a project report is prepared. It is a written document that describes step by step the strategies involved in starting and running a business. Few essential of the project report following are the essential of the project report. First, the project report should be sequentially arranged. Second, the project report should be covering all the details about the proposed project. Third, the project report should not be very lengthy and subjective. Fourth, the project report should logically and objectively explain the objectives and projections. Fifth, the projection should be approximately be made from 2 to 10 years. Sixth, the project report should be professionally made to demonstrate that the promoter possesses entrepreneurial, acumen and sound experience. Seventh, the project report should justify the financial needs and financial projection. Ninth, the project report should be attractive to financial agencies and investors. The last point is 10th point, the project report should also have a high aesthetic value. Now let's discuss the project report preparation. There are various steps that involved in this. First is cover sheet. Cover sheet is like a cover page of the book. It mentions the name of the project, address of the headquarter and the name and address of the promoters. So cover sheet is very important. Second, table of content. Again, the table of content is like a table of content of the book. It guides the person
reviewing the project report to the desired section quickly. A good methodology is to divide the project report into section and number or label the each section like 1, 2, 3, A, B, C, or divide the section into subsections like 1.1, 1.2, 1.3 and so on. Third is executive summary. Executive summary is the first impression about the business proposal. As the saying goes, the first impression is the last impression. A carefully presentation of information should be done to attract the more audience. It is a small summary and it is a brief summary. That is, generating ideas in the minds of the readers is the prime motive of the executive summary. Next is the business. This will give the details about the business concept. It will discuss the objective of the business, a brief history of the past performance of the company, what will be the ownership form, and other things. Next is funding requirement. Since the investor or financial institutions are one of the key bodies examine the project reports, and it is one of the primary objective to preparing the project report, a careful, well-planned funding requirement should be documented. Next is the product or services. A brief discussion of the product and services is given in the subsection. It includes the key features of the product range that would be provided to the customers and the advantages that product hold over and about the similar product substitute product available in the market. Next is the plan. Now the functional plan for marketing, finance, human resource, operation plans, all the plans have to be considered while preparing a business plan. Now let's discuss the next step, that is critical risk. The investors are interested in knowing the tentative risks to evaluate the variability of the project and to measure the risk involved in the business. This can further give confidence to the investors as they can calculate the risk involved in the business for their perspective as well. Next is exit strategy. The exit strategy would provide the detail about how the organization would be dissolved, what would be the share of each stakeholder in case of winding up of the organization. It further helps in measuring the risk involved in investing. Last point is appendix. The appendix can provide information about the curriculum vitae of the owners, ownership agreement, certificate of pollution board, memorandum of understanding, article of association, all the supporting document that can help in marketing the project variability at a large. Let's discuss the last point, that is evaluation, control and review. Now, as we know, the project report is made. This step will ensure that the company is achieving what is set out to accomplish. It compares performance with the desired results and provides the feedback necessary for management to evaluate results and take corrective actions as needed. Ensure that the company is achieving what it is set up to accomplish. नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। हम जैसे कि देख रहे हैं कि आज हर दूसरा बच्चा बाहर फॉरेन में जा रहा है, तो हमें अपने देश में भी कुछ ऐसी अल्टीमेट स्टोरीज देखने को मिलती हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स लाती हैं। और हम देखें, हम छोटी सी जगह पे रहते हैं, बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं, पर फिर भी हमारा नाम आज की किंग रेस में सबसे पहले नंबर पर है। तो आज हम बात करने आए हैं बालाजी किन्नू वैक्सीन प्लांट के ओनर से। तो हम
बात करना चाहेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये क्वेश्चन, ये आइडिया कहाँ से आया कि हम ये किन्नू वैक्सीन प्लांट लगाना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस मौके से मैं ये समझती होगी मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब सबसे पहले होता है जी मेहनत मेहनत मेहनत। अगर मेहनत यहाँ भी बच्चा करे तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से प्लानिंग से सबसे पहले जो भी काम करना है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर बिना प्लानिंग के कोई करेगा तो बाहर जाके भी कुछ नहीं कर पाएगा, और प्लानिंग से काम करेगा तो यहाँ भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। मेरा गांव घल्लू है, यहाँ फाजिलका रोड पे 12 किलोमीटर पे मेरा वहाँ का जन्म है। मेरी वहाँ छोटी सी किराने की दुकान थी मेरे फादर की, मैं उनके साथ मिलकर काम करता था। लेकिन मतलब बहुत 1980 में जो हमारा मैं पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया, 7वीं 8वीं तक ही पढ़ पाया, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत कुछ एक ऐसा ठान लिया कि मैं यार कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने अपने स्कूल के आगे, मतलब कोई सिंपल काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने अपने स्कूल के आगे कुल्फियां बेची हैं, मैंने अपने स्कूल के आगे फ्रूट बेचा है, अमरूद काट के, किन्नू काट के, मौसमी काट के। पहले माल्टा होता था, किन्नू होता ही नहीं था। ऐसे ही हमने छिप्पा वाली में सबसे पहले एक छोटा सा बगीचा लिया माल्टे का। माल्टा हमने जो ये बगीचा लेके फिरोजपुर तक साइकिल पे हमने जो उसकी मार्केटिंग करी। साइकिल पे जो है ना 2-2 क्विंटल वजन लेके माल्टे का, और मैंने फिरोजपुर तक फाजिलका जलालाबाद वहां मार्केटिंग करी। तो मेरे को कुछ अच्छा लगा कि ये काम फायदे वाला है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे छोटे बगीचे लेने शुरू किए। फिर हमने शुरू किया किन्नू जो है ना जी, मतलब पहले वैक्सीन प्लांट नहीं होते थे। वैक्सीन प्लांट जो है 2001-2002 में आए हैं। सन 2000 से पहले कोई वैक्सीन प्लांट नहीं था, बगीचे से ही पैकिंग होती थी। बगीचे से क्या, ये किन्नू नया नया आया तो मतलब हाथ से लोग ऐसे खरीद देते थे तो बीच में से छिलका निकल जाता था, तो दिल्ली तक ही पहुंच पाता था। हमने हॉर्टिकल्चर को एक पहुंच करी भी, उनको बोला कि इजराइल की कैंची, जो कैंची हमने देखी कहीं से, तो इसको बटन कट दीजिए, डंडी ना साथ में हो, पंचर ना हो जाए। तो दाने पंचर हो जाते थे, गुत्थियां होती थी। फिर मैंने डब्बा पैकिंग शुरू की, और धीरे धीरे जो है मैंने दिल्ली तक पहुंच गई, लुधियाना, जलंधर, दिल्ली, वहां भी अच्छा रेट मिला हमें। फिर धीरे धीरे 2001 में जो प्लांट वैक्सीन प्लांट आ गए, वैक्सीन प्लांट आने से हमने साउथ में पहुंच करी, बेंगलोर, चेन्नई है, केरला है, वहां भी अच्छी मंडियां हमें मिल गई, उससे भी अच्छे दाम मिलने लगे, किसानों को भी अच्छे दाम मिलने लगे। जो वैक्सीन प्लांट एक किसानों के लिए वरदान है, जो हमने खोज निकाली कि इसको वैक्सीन करके जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। किन्नू की शेल्फ लाइफ बढ़ने से जो क्या होता है ना जी, उसकी मतलब 20 दिन तक 25 दिन तक कोई भी अपन मार्केट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बॉक्स अगर क्रेट का आ गया, क्रेट में चल गया, हमने फिर दुबई पहुंच गई, दुबई में भी किन्नू हमारा जा रहा है, आगे जा रहा है। फिर हमारा बांग्लादेश में भी जा रहा है, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी भेजा है। इंडिया तो पूरा जा ही रहा है, लेकिन मैंने छोटे से काम से लेके और मैंने अपनी मेहनत से, और एक बहुत बढ़िया किसानों को भी फायदा मिला, इसका हमें भी फायदा मिला। आज मेरी क्रेट की फैक्ट्री भी है, क्रेट हमें बाहर से लाना पड़ता था, मैंने सबसे पहले क्रेट की फैक्ट्री लगाई। उस मेरे को देख के लोगों ने आज 12-15 प्रोजेक्ट यहाँ क्रेटों के हैं। जो हमारा क्रेट कभी हमने दिल्ली से लाना पड़ता था, आज वो क्रेट जो है हमारा, मतलब वो पूरे इंडिया में, श्रीनगर है, हिमाचल है, मतलब आम सहारनपुर है, जब भी आम का सीजन चलता है, एप्पल का चलता है, तो वो क्रेट यहाँ से जाता है, दिल्ली से ना जाके। एक किन्नू में मतलब कितना बिजनेस बढ़ गया। ये क्रेट की फैक्ट्री में अभी हमने मतलब डीजल अपने मतलब भाड़ा जो है ट्राले का होता है ना, तो वो 1.5 लाख वो कहते हैं 50,000 एडवांस दे दो या डीजल जुआ दो। तो हमने पंप भी अपना लगा दिया। लोगों को इतना बाहर पैसा जा रहा है, तो पंप भी मैंने अपने लगा दिया। आज क्रेट की फैक्ट्री में भी अपनी है, 4-5 वैक्सीन प्लांट है मेरे अपने। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बाहर जाना बिल्कुल मैं नहीं समझता। जो आदमी मेहनत करना जानता है या कुछ दिमाग है उसमें, तो यहाँ इंडिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो आज मेरे पास 2000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसकी मैं आज मतलब कहीं तो मैं अपनी खुद के स्कूल का ठेली लगाता था, तो आज मैं 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भर रहा हूँ हर साल का। कम से कम 1 करोड़ रुपया मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, टैक्स भरता हूँ 4
रिपोर्ट पे हमने दिखा कि तो ऊपर टैक्स भरे मेरे को बहुत फंस रहा है, परमात्मा की कृपा है। मतलब अभी और मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास जो स्टाफ है 20-20 साल पुराना है जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो भी अच्छा स्टाफ है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई मतलब जो आज जुड़ गया हमारे साथ 1992 से बाहर स्टाफ काम कर रहा है, तो वो आज भी वही स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है जो अपने भी बाहर जाके कुछ ज्यादा कमा लेंगे, कमाई यहाँ भी है, ऐसा यहाँ भी बन सकता है, लेकिन मेहनत से। सर किन्नू के सीजन पीरियड का आप कुछ बता सकते हैं? किन्नू का सीजन 100 दिन का होता है। किन्नू का जैसे नवंबर में शुरुआत होती है, 15 मार्च को एंड हो जाता है। ओके सर। और बाकी के टाइम जो प्लान होता है वो एकदम फ्री होता है, तो उस टाइम क्या हो रहा होता है? मतलब बाकी का प्लान ये मेरे पास है इतना भी अमेरिका से मेरे पास कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। पत्रकार जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, मेरी किताब लिखी हुई है, तो वो मेरे को मिलने के लिए आया। तो वो एक हफ्ता यहाँ रुका, तो वो उसने बोला कि सारे प्लांटों में विजिट किया उसने, तो उसने बोला कि आपका जो सवाल था ना ये बाद में क्या करते हैं। देखो हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखो कोई भी फ्रूट का काम करने के लिए प्लास्टिक की क्रेट चाहिए, तो क्रेट हमारे पास है। अगर बाहर से मैंगो की गाड़ी आती है, ग्रेप्स की आती है, तो उसको आगे भेजने के लिए एक जगह चाहिए, वो भी है, उसके लिए स्टाफ चाहिए, वो भी है। इसके बाद मैं संतरे में प्लांट लगाया नागपुर, ये किन्नू खत्म होता है ना तो संतरा शुरू हो जाता है। संतरे का भी मैंने परतवाड़े में डिस्ट्रिक्ट अमरावती में परतवाड़ा है, वहां पे 4 एकड़ जगह लेके वहां भी मैंने संतरे का प्लांट लगाया हुआ है। उसके बाद संतरा शुरू हो जाता है, पंजाब में बिकता है। उसके बाद ग्रेप्स आ जाता है शोलापुर से, सांवली से, फिर अंगूर हम बेचते हैं, फिर उसके बाद मैंगो आ जाता है, आंध्रा से आता है, यूपी से आता है, तो आम का जो फ्रूट बड़ा लंबा सीजन होता है। उसके बाद श्रीनगर का एप्पल आ जाता है, हिमाचल का, हम सारा साल फ्रूट का काम करते हैं। ये एक बड़ा मतलब हमारे पास बाकी दूसरे लोग नहीं कर रहे, हम सबको बोलते हैं कि यार दूसरा काम भी करो साथ में आपके पास। आज देखिए मेहनत से एक आदमी कहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ सर कुछ सिक्के गिना करते थे, पर अब देखिए सर के बस इतना भी टाइम नहीं है कि सर नोट गिन सके, और सर ने अब नोटों की मशीन रखी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि मेहनत इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। थैंक यू सो मच सर। हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं। ਜਦੋਂ बगीचे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਟਰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਡਸਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਡ੍ਰਿਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बाकी पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ साफ हो जाता है। उस तो अगे बुरश वो होंगे वो उस तो अगे निकल जाता है, मतलब वैक्स हो जाती है। वैक्स होने तो बाद फिर ड्राई होता है। फिर वैक्स सुक जाए, उस तो बाद अगे साइज अलग अलग हो जाता है। फिर अगे जी कार्रवाई हैगी वो पलट के ग्रेडिंग करके 1 नंबर अलग, B ग्रेड अलग, सारा ग्रेडिंग करना पैंदा। ਤੇ ਆਫਟਰ ਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਕਿਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। अलग अलग साइज का दिखता है। और जो ट्रेडिंग के बाद का क्या प्रोसीजर है, उसके बाद किस तरह की इसकी पैकिंग की जाती है? वैक्सीन के बाद ग्रेडिंग करना पड़ता है, जो लीन दाना है या फटा हुआ है या कोई पोला दाना है जो वो निकालना पड़ता है, वो तो यूपी बिहार की मंडियों में चला जाता है। बाद में ये क्रेड में पैकिंग होके वो क्रेड में पैकिंग होके
गवर्नमेंट रोड होते अलग अलग। ठीक है सर, तो मतलब ये प्रोसीजर इसका। हाँ।